इसमें शामिल है, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी इसमें शामिल है और कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति गोवा में रेप्लिकेट हो सकती है क्या। मेरे साथ अब संजय राउत जुड़ने वाले हैं, शिवसेना के सांसद। मैं उनको आमंत्रित करता हूं इंडिया टुडे राउंड टेबल के स्टेज पर। कई सारे सवाल हैं। अभी थोड़ी देर पहले रणदीप सुरजेवाला जो कहकर गए हैं उसके कुछ जवाब भी हम संजय राउत से लेना चाहेंगे कि मुंबई में कहावत है, आपने गाना सुना होगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। संजय जी, आप माइक उठाइए। उठाया। गोवा में कई लोग पूछते हैं कि गोवा के अंगने में महाराष्ट्र का क्या काम है। गोवा के अंगने में सिर्फ महाराष्ट्र का ही काम हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोवा के फाउंडेशन में महाराष्ट्र का बहुत बड़ा रोल है। गोवा की जो ओरिजिनल पार्टी है एमजीपी, उसका पूरा नाम क्या है, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, जो बहुत साल से गोवा में राज कर रही थी, आज भी है। तो उसमें ही आपको उत्तर मिल गया ना कि गोवा, महाराष्ट्र में गोवा का क्या काम है। गोवा के लिए महाराष्ट्र से जितने लोग शहीद हुए हैं, अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा गोवा और महाराष्ट्र का क्या रिलेशन है। तो चलिए मैं सवाल थोड़ा सा घुमाता हूं। फिर गोवा में शिवसेना का क्या काम है। आपने 2017 से शुरुआत की। 2017 में आपने आरएसएस के जो गोवा के हेड थे उन्होंने गोवा सुरक्षा मंच बनाया था। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी जिसका आपने जिक्र किया वो भी आपकी सहयोगी थी उसमें, और शिवसेना और वो दोनों ने मिलकर यहां पर एक गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ने की कोशिश की थी। शिवसेना का तो डिपॉजिट जब्त हो गया। आप एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार आप राष्ट्रवादी कांग्रेस को साथ में लेकर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि शिवसेना का क्या काम है गोवा में। देखिए, शिवसेना गोवा में आज नहीं काम कर रहे। ठीक है, चुनाव में हमें उतना सक्सेस नहीं मिला, ये सही बात है, लेकिन चुनाव तो हम पहले भी लड़े हैं। बाला साहब ठाकरे साहब भी यहाँ प्रचार को आए थे बहुत बार। एमजीपी के साथ भी हमारा अलायंस हुआ था उस वक्त, लेकिन हमारे खाते में अलायंस में 2 या 3 सीटें आती थी हमेशा, और हमको ऐसी सीटें मिलती थी जहां शिवसेना का कोई वजूद नहीं, काम नहीं। आपने 2017 का जिक्र किया, गोवा सुरक्षा मंच और एमजीपी के अलायंस में हमें 2 या 3 सीटें मिली। हम जो सीट मांगते थे मापसा, पेड़ने, मई, वो हमें नहीं मिली। अलायंस में किसी और जगह पे हमें दे दिया। हमने चुनाव लड़ा जहां हमारा कोई काम नहीं था। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हम 12 सीट पर हमने नॉमिनेशन फाइल किया है। उसमें से पणजी की जो सीट है हमारे कैंडिडेट ने उत्पल पर्रिकर के लिए विड्रॉ किया है। 11 सीट पर हम लड़ेंगे, आप देखेंगे क्या होता है। लेकिन आप वोट कहां से लाएंगे। बीजेपी कहती है कि आपका तो सरपंच भी नहीं है। बीजेपी के कहां आप सीधा विधायक बनाने बीजेपी के पास कहां वोट है, आप मुझे बताइए। आपको लगता है बीजेपी के पास वोट है? ये तो सब डकैती, चोरी मारी करके वोट आते हैं उनके पास कहां है लोग। कभी उसको पकड़ो, कभी उसको खरीद लो, कभी उसको खींच कर लेके आओ। खुद के कहां है, किसी के पास है। कांग्रेस अगर छोड़ दे यहां तो किसी के पास वोट नहीं है, किसी के पास वोट नहीं। एक जमाने में एमजीपी के पास वोट थे, आज उनके पास भी वोट नहीं है। आज कांग्रेस के पास वोट है। बाकी चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चलेगा कौन किसके साथ है, वोटर्स किसके साथ है। यहां एमएलए को जो खरीद सकेगा वो लगता है वोट मेरे पास है, ये नहीं है। हम लोग ये नहीं मानते। आज चाहे यहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन शिवसेना आम आदमी की पार्टी है। अब हमारे कैंडिडेट देखिए, जैसे और पार्टी में माफियाज, ये माफिया, वो माफिया, लैंड माफिया, हमारे यहाँ हमने लोगों से उठाकर कार्यकर्ताओं को टिकट दिया। यही लोग गोवा का चेहरा बदलेंगे राजनीति का। लोग ये कहते हैं कि जिनका कोई नहीं हुआ उनकी शिवसेना हो गई। किसी को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, किसी को बीजेपी से। आप मुझे बताइए ऐसे कौन लोग हमारे पास है? सभी शिवसेना के लोग हैं जो सालों साल से यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे पास भी लोग आए थे कि मुझे नहीं मिल रहा है टिकट कांग्रेस से, या हमें ले लो। मेरे उनका क्या भरोसा, आएंगे और कल चले जाएंगे। जो गोवा की राजनीति का एक चरित्र बन गया है, ये नहीं होगा। अभी हमारे 2 विधायक भी अगर विधानसभा में जाएंगे तो गोवा के विधानसभा और गोवा की राजनीति का पूरा कैरेक्टर बदल देंगे हम लोग। अब देखिए, दो ही काफी है। आपने कोशिश बहुत की कि कांग्रेस के साथ आपका अलायंस हो जाए।
कांग्रेस के पास आपने कहा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी हमारी है महाराष्ट्र में, यहां भी हम अलायंस बना लेते हैं, एनसीपी को 1 सीट दे दीजिए, हमें 3 सीट दे दीजिए। कांग्रेस ने आपको साथ नहीं लिया। अभी कांग्रेस के नेता यहां पर कह रहे थे कि ये वोट कटवा है, ये तो वोट काटने के लिए लोग आए हुए हैं, उन्होंने टीएमसी को भी साथ में नहीं लिया। आपने बहुत कोशिश की, आपने कहा कि कांग्रेस अगर साथ में लेकर चलती तो बीजेपी के खिलाफ जो वोट है वो बट्टा नहीं। आपने कांग्रेस पर दोष डालने की कोशिश। ये विचार कांग्रेस ने करना चाहिए था। शिवसेना एक हिंदुत्ववादी पार्टी है, वो कभी छुपा नहीं, प्रखर हिंदुत्ववादी है। अगर राहुल गांधी जी से मेरी बात तो हमेशा होती है, तो राहुल जी के पास मैंने जरूर प्रस्ताव रखा था कि शिवसेना को साथ रखिए, एक हिंदुत्ववादी पार्टी आपके साथ रहेगी तो आपको जरूर देश में फायदा होगा, कि आपका जो एक चेहरा बन गया है कि बहुत ही आप ज्यादा सेक्युलर है, मुसलमानों की पार्टी है, ये पार्टी है, वो पार्टी है, हमें साथ रखने से आपको मदद होगी। राहुल गांधी भी मुझे लगता है कि कन्विंस हो गए हैं, लेकिन गोवा में ऐसा हुआ हमारा कि हम थोड़े यहाँ बातचीत थोड़ी सी लेट शुरू हो गई। तब तक कुछ सीटों पर कांग्रेस के यहाँ के लोकल जो उनका यूनिट है सीटों का बंटवारा हुआ था। हमारे यहाँ बातचीत हो गई उनके नेताओं से, जरूर केंद्रीय नेता भी उसमें थे। और मैं आपको बताता हूँ, हमको 3 सीट देने की निर्णय हो गया था, लेकिन वापस वही हो गया। 2 सीट हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है, 2 सीट हमें चाहिए वो हमें नहीं दे रहे हैं, और किसी और सीट पर हम लड़ेंगे तो वापस वही खेल होगा। 3 सीट पर लड़ेंगे, पार्टी नहीं बढ़ेगी, हम चुन कर नहीं आएंगे। तो बोला ठीक है, यारी दोस्ती रहेगी, फिर मिलेंगे चुनाव के बाद। तो आप यारी दोस्ती पे चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ में? कांग्रेस ने अभी कहा कि आम आदमी पार्टी उनका वोट काटने के लिए खड़ी है, उसका फायदा बीजेपी को होगा। देखिए, आप भी वहां पर खड़े हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ आपको अलायंस करना था, लेकिन आपको ऐसी सीट दे रहे थे कि जहां पर जीतने का कोई चांस नहीं है। देखिए, हर पार्टी की एक मजबूरी होती है। गोवा में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, बहुत साल उनके मुख्यमंत्री रहे, 17 एमएलए उनके विधायक उनके चुनकर आए थे। आज भी वो बड़ी पार्टी हो सकती है, अगर आप सर्वे कर ले या लोगों से बात करें तो मुझे लगता है आज भी वो बड़ी पार्टी हो सकती है। तो अगर उनकी मजबूरी है, वो नहीं कर सकते, एक बात किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारे बैक स्टैबिंग तो नहीं है ना, खुलकर बात हो गई है, नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बैक स्टैबिंग में? बैक स्टैबिंग तो नहीं है, पीठ में कोई खंजीर तो नहीं खुपस रहा है ना, बात हो गई, ठीक है आप लड़ो हम लड़ेंगे, बाद में देखेंगे। नहीं, आप किस पर कटाक्ष कर रहे हैं? बोल रहा, राजनीति में ये होता है, एक बात होती है और बाद में बात लोग पलट जाते हैं। यहां ये बात नहीं हुई, ये आमने सामने बात हो गई हमारी। उद्धव जी ने भी हमें अलाउ किया था, पार्टी चीफ ने, क्या बात करिए, अगर कोई अलायंस होता है तो हम जरूर स्वागत करेंगे, लेकिन नहीं हो सका। तो हम दुश्मन तो नहीं, हम महाराष्ट्र में एक साथ काम करते हैं, देश में एक साथ काम करते हैं, चुनाव के बाद देखेंगे क्या होता है। देखिए, आपने मनोहर पर्रिकर के खिलाफ चुनाव लड़ा था 2017 में, तो क्या हो गया? अभी आप उन्हीं के बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके कैंडिडेट वापस लिए गए, मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर आपको मिलके भी आए। देखिए, और अभी आप कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी ने कैसे मनोहर पर्रिकर के बेटे को टिकट नहीं दिया, ये गलत किया। बीजेपी किसको टिकट दे वो बीजेपी का फैसला है, आप उनमें जो झगड़ा है उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी अपने आप को एक बहुत ही नीतिमान चरित्रवान लोगों की पार्टी मानती है, होनी भी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी है, हाँ, बड़े बड़े नाम उनके पार्टी के साथ जुड़े हैं, नानाजी देशमुख जैसे लोग उस पार्टी में थे। उत्तर प्रदेश में उनका प्रचार चल रहा है कि आप उत्तर प्रदेश में आजम खान, मुख्तार अंसारी और भी नाम लेते कि ऐसे लोग यहाँ नहीं है। लेकिन गोवा में, पणजी में किसको आपने उम्मीदवार बनाया है? वहां एक कैरेक्टर, यहाँ एक कैरेक्टर, यहाँ ढीला कैरेक्टर, वहां कैरेक्टर। गोवा में आपने किसको दिया है? उत्पल पर्रिकर की जो लड़ाई है वो राजनीतिक लड़ाई नहीं है, मैं आपको बताता हूं। वो लड़ाई है गोवा का पॉलिटिकल कैरेक्टर सुधारने की लड़ाई है, गोवा का राजनीति शुद्ध करने की उनकी लड़ाई है। मनोहर पर्रिकर ने लड़ाई गोवा में शुरू की थी, उनके साथ हमारे जरूर मतभेद थे, लेकिन अगर उनका बेटा गोवा को शुद्ध करने के लिए, राजनीति शुद्ध करने के लिए कुछ कदम उठाता है
तो हमारा कर्तव्य बनता है। नहीं, बट आपने टिकट देने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि नहीं मैं बीजेपी के खिलाफ किसी को। हमने किसी को टिकट देने की कोशिश नहीं की, ये गलत है। हमने इतना ही कहा था, अगर उत्पल पर्रिकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ते हैं तो हम हमारा उम्मीदवार पीछे लेंगे, यही हमने कहा था और हमने ले लिया। हमने शैलेंद्र वेलिंगकर को वहां उम्मीदवार बनाया था, उसने पर्चा भरा था, लेकिन जब उत्पल पर्रिकर का पर्चा वैध हो गया, क्वालिफाइड हो गया, तब हमने पीछे ले लिया। नहीं, कुल मिलाकर मुझे यह दिख रहा है कि आपकी राजनीति इस बात पर चल रही है कि किसी न किसी तरीके से बीजेपी को चोट पहुंचे, नहीं, किसी न किसी तरीके से बीजेपी को चोट ऐसे नहीं पहुंचे, है। फिर उत्पल पर्रिकर को सपोर्ट करें आप क्या बीजेपी। आप नहीं चाहते कि राजनीति में अच्छे लोग आए? आप चाहते हैं कि जिसके ऊपर बलात्कार के, माफियागिरी के और भी गंदे गंदे जो आरोप है, ऐसे लोग विधानसभा में पहुंचा? आप भी चाहेंगे? कोई नहीं चाहेगा। ये तो लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये देश की लड़ाई है। जो मोदी जी भी चाहते थे कभी यही कि मैं देश की सूरत बदल दूंगा राजनीति की। तो ये अगर पणजी गोवा जैसे एक छोटे राज्य में एक छोटा लड़का इस लड़ाई में उतरा है, कभी केजरीवाल ये लड़ाई लड़ते थे ना, तो ठीक है, कुछ हुआ नहीं उनसे। तो हम देखते हैं ये आशा की किरण अगर लेकर उत्पल पर्रिकर पणजी में लड़ता है तो उस किरण क्या मशाल बना देंगे गोवा में? लेकिन संजय जी, कल अगर उत्पल पर्रिकर जीत गए, उत्पल पर्रिकर कई बार ये लोगों से ये कह देते हैं कि फाइनली अगर बीजेपी सरकार बनाने आ जाएगी तो उत्पल पर्रिकर बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे। लक्ष्मीकांत पार्सेकर अगर जीत गए, जो बीजेपी के खिलाफ चीफ मिनिस्टर थे, देखिए, मैं दोनों पर बीजेपी विश्वास के पास रखता हूं। पार्सेकर जी का बयान मैंने सुना है और देखा है कि वो बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी के साथ मेरा रिश्ता टूट गया है। उत्पल जी का भी यही बात जब होती है तो यही बात वो करते हैं, पहले जितने दो उनको, बाद में देख लेंगे। तो आपका लक्ष्य क्या है गोवा में? आप क्या लोगों को क्या कह रहे हैं? पिछली बार की आपकी कैंपेन मुझे याद है, आपने गोवंश हत्याबंदी पर गोवा में नहीं है उसको लेकर आपने सवाल उठाए थे। गोवा की कोई कल्चर को चोट पहुंच रही है, हिंदू कल्चर को चोट पहुंच रही है, इसको लेकर आपने सवाल उठाए थे। अब आपका क्या ये रहेगा? राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी के साथ आपने आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप गोवा के लोगों को कह क्या रहे हैं आखिर? गोवा के लोगों को हम इतना ही कहेंगे कि बीजेपी को वोट मत दो। नहीं, हमने ये कभी नहीं कहा बीजेपी को वोट मत। हाँ। हमने हमने कहा कि शिवसेना को वोट दीजिए। विधानसभा में अगर शिवसेना के 2 भी विधायक हो गए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी बार बार पार्टी बदलने की। जैसे महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे कहते थे ना, यही हमारी पार्टी है। अगर किसी ने एक पार्टी पर चुनाव लड़ा है और 24 घंटे में पार्टी बदलता है ना, तो हम रास्ते पे उसको पकड़ लेंगे। भाई, आपने लोगों से धोखा किया है, ऐसी धोखेबाजी अब नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ शिवसेना अब आई है और गोवा की जनता को धोखा देने वाला जो है वो बिहार राजनीति में नहीं रहेगा। क्या आपने कोशिश की थी कि अब देखिए गोवा में बड़ा इंटरेस्टिंग मामला बनता जा रहा है, ईस्ट कोस्ट से, मतलब पूर्व से तृणमूल कांग्रेस वेस्ट कोस्ट पर आकर चुनाव लड़ रही है। हमने देखा अभी कि गोवा में अगर कैंपेन दिखता है तो तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े होर्डिंग्स वहां पर नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली से गोवा में आके अपना वजूद बनाने की कोशिश कर रही है, कम से कम वो चर्चा में आ गई है। ऐसा लगता है कि शिवसेना को बस इतना करना है कि किसी ना किसी तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ उनका झगड़ा है तो वो गोवा में कंटिन्यू करो, गोवा में उनको चोट पहुंचाओ, यूपी में बीजेपी को चोट पहुंचाओ, बिहार में जाके उनको चोट पहुंचाओ। पूरा आपका जो कंसंट्रेशन है वो बीजेपी को नीचे करने के लिए लगा हुआ है। बहुत गलत है। आप ये जो बोलते हैं कि ईस्ट कोस्ट से एक पार्टी आई गोवा में, दिल्ली से केजरीवाल जी आए हैं, आने दो। चर्चा है कि शिवसेना की चर्चा नहीं है, उनकी भी चर्चा है। उत्पल पर्रिकर के साथ जब आपने हमारा नाम जोड़ा है, चर्चा नहीं होगी। फिर आपने हमें यहाँ बुलाया क्यों? चर्चा है पार्टी की गोवा में, इसलिए तो आपने हमें चर्चा के लिए यहाँ बुलाया है। हमारी भी चर्चा है। आप देखिए, मैं आपको अभी 10 चुनाव क्षेत्र के नाम देता हूं, आप जाकर देखिए वहां क्या काम चल रहा है। मुंबई में, महाराष्ट्र में जिस तरह से काम चलता है पार्टी का, इसी तरह से आज 11 चुनाव क्षेत्र में हमारा काम चल रहा है। एक और चर्चा बहुत हो रही थी कि चुनाव के बाद क्या होगा, नतीजे आने के बाद क्या होगा। अगर हंग असेंबली आती है और अगर आप जैसे कह रहे हैं कि आपके 2 भी जीत कर आएंगे तब भी काफी बदलाव हो जाएगा, तो आपके सपोज अगर 1-2 विधायक यहां पर जीत जाते हैं तो क्या आप क्या करेंगे? आप बीजेपी के साथ नामुमकिन है जाना, कांग्रेस के साथ जाना अपोजिशन में बैठेंगे।
हम अपोजिशन में बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? क्या अपोजिशन में बैठना गुनाह है क्या? राजनीति सरकार बनाने के लिए अगर कल बीजेपी कहे कि भाई महाराष्ट्र में जो हमारी भूल जाइए, यहाँ पर हम साथ में आते हैं, हमारी कमिटमेंट है लोगों से। जिस विचारधारा पर हमने चुनाव लड़ा है वो कायम रहेंगे हम। अगर कांग्रेस के साथ या कोई महाविकास आघाड़ी का गठबंधन होता है यहाँ, तो जरूर हम विचार करेंगे, लेकिन सिर्फ सत्ता में जाना है, सरकार में जाना है, इसलिए लोगों के साथ धोखा नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन बीजेपी के साथ आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, किसी भी हालत में बीजेपी नहीं जाएंगे। बीजेपी से क्या क्या दिक्कत है भाई? यहाँ पर तो आप अलग, महाराष्ट्र का झगड़ा तो यहाँ पर नहीं है। बात झगड़े की नहीं है। फिर झगड़ा किसी के साथ? राजनीति में देखिए इस प्रकार के झगड़े नहीं चलते, लेकिन महाराष्ट्र में हमारे गठबंधन है, वही गठबंधन पूरे देश में होगा और उसी गठबंधन की शिवसेना हमेशा हिस्सा रहेगी। आज एक ट्वीट मैंने आपका देखा, आज सुबह सुबह आपका ट्वीट आया था, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? और आपने उसमें ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे को टैग किया है। उसमें आपका ट्वीट यह है कि पहले लालच दिया, ऑफर्स दिए, फिर डराया धमकाया गया, तब भी झुका नहीं तो परिवार को धमकाया गया। हमने कहा छोड़ दो, नजरअंदाज करो, इन्हें जाने दो। तो अब सेंट्रल एजेंसी को हमारे पीछे लगा दिया गया है, 2024 तक चलेगा भी, पर हम नहीं झुकेंगे। क्या कहना चाहते हो? और ममता बनर्जी को आपने अटैक किया है, क्योंकि आपने ममता बनर्जी पर अटैक किया था हाल ही में मुंबई में कि कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश नहीं किया था। ये हमारी भूमिका है कि कांग्रेस को कमजोर करके इस देश में कोई गठबंधन या कोई फ्रंट नहीं बन सकता, ये हमने कहा। ये अटैक कहाँ है? ममता जी भी यही चाहेगी। अगर हमको 2024 में एक लंबी लड़ाई लड़नी है मजबूती से, तो आप कांग्रेस को कैसे अलग कर सकते हो? नहीं, सभी को साथ लेकर जाना है। और ममता जी एक महत्वपूर्ण नेतृत्व करती है स्टेट के, और भी राज्यों में उनका फैलाव हो रहा है। कांग्रेस भी है, कांग्रेस जरूर कुछ राज्यों में कमजोर है, उसका मतलब कांग्रेस का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है। और कांग्रेस को बाजू में रखकर हम कोई फ्रंट नहीं बना सकते, यही हमने कहा। ममता जी को भी यही मान्यता है, ये विचार नहीं। तो ये ट्वीट किसके बारे में था? क्या क्या नहीं, महाराष्ट्र में जो चल रहा है आजकल, महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी के नेता हो, मंत्री हो, जो बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, जो सरकार, जो बीजेपी की बात नहीं मानेंगे, तो उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई जैसे बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो लगा देते हैं। आपके एक नजदीकी उनको? नहीं, नजदीकी नहीं, हमारे घर तक पहुंच गए ना। मैंने 2 दिन पहले सिर्फ बीजेपी के ऊपर एक कमेंट किया था, बड़े नेताओं के ऊपर। 4 घंटे में हमारे आसपास, हमारे रिलेटिव्स के पास ईडी वाले चले गए, और जो केस नहीं है उसको निकाल कर खंगालना शुरू करने दो। हम नहीं डरते, जो भी करना है, हमें जेल में डालना है जेल में डाल दो। 2024 तक ये चलेगा, मैं बोलता हूं। 2024 के बाद असली खेल शुरू होगा। किस खेल की बात कर रहे हैं? क्या गोवा से ये खेल शुरू होगा? नहीं, उत्तर प्रदेश से होगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश के राजनीति में क्या होता है, चुनाव के नतीजे आने दो, फिर पता चलेगा 2024 में क्या हो रहा है। जब मैं बोलता हूं ना, तो हमें भी पता है कि आगे क्या होने वाला है। डरने वाले से हम नहीं है। आप चाहे हमें गोली मारो, कुछ भी करो, हम नहीं डरेंगे। क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का जो एक्सपेरिमेंट है वो गोवा में रिपीट होते हुए आपको नजर आ रहा है? जरूर, डेफिनेटली होना भी चाहिए। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? देखिए, गोवा एक छोटा राज्य है, जिसको 20 या 22 सीट मिलता है उसका बहुमत बन जाता है। 2017 में कांग्रेस की सरकार बनते बनते रहेगी, लोगों ने, सामने वाले के लोगों ने खरीद लिया लोगों को। कांग्रेस की भी थोड़ी गलती रही उसमें, मुझे लगता है बहुत देर कर दी सरकार बनाने में। एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड के जो विधायक थे वो तो कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए तैयार थे, मुझे मालूम है। महाराष्ट्र में आपने गलती नहीं की? हम कभी नहीं गलती करेंगे। हम महाराष्ट्र में कभी गलती करेंगे नहीं, और आने वाले देश की राजनीति का हिस्सा बनकर हम रहेंगे, और हम कभी गलती नहीं करेंगे निर्णय लेने में। आपने हाल ही में कहा कि अब बीजेपी के साथ आपके रिश्ते खत्म हो गए, अभी दोबारा वो रिश्ते कभी बन नहीं सकते। जी हाँ। क्या ये हम पकड़ के चले कि अब किसी भी तरीके से बीजेपी के साथ, फिर किसी भी राज्य में, महाराष्ट्र की अगर खास करके हम बात करें, तो
किसी भी तरीके से आपका कोई देखिए, गठबंधन कभी नहीं होगा, कभी आप उनके साथ नहीं जाएंगे। ये बात तो हमारे पार्टी चीफ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने भी कही है। ये संजय राउत की बात नहीं है ना, पार्टी चीफ ने ये जाहिर किया है। तो यही है, हमारे पार्टी में जो शिवसेना प्रमुख की जो बात आती है वही हम लेकर आगे जाते हैं। अगर उद्धव ठाकरे साहब ने कहा है तो उसमें आप पीछे मुड़ने की या पीछे हटने की बात ही नहीं है, हम लड़ेंगे ना। आपने ममता बनर्जी को क्यों टैग किया था, मेरा एक सवाल रह क्योंकि गया था। ममता बनर्जी और उनकी सरकार भी यही संकट से गुजर रही है। जब भी ममता जी मुझे मिलती है, जब भी तृणमूल के नेता हमें मिलते हैं, तो यही कहते हैं कि हमें ये सीबीआई ईडी ने परेशान करके रखा है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम भी उनसे लड़ेंगे। नहीं, वो भी कहते हैं कि आपने भी पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जिस तरीके से अपोनेंट जो आपके अपोजिशन पार्टी के लोग हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। किसको किया? अभी नीतीश राणे के साथ जो हुआ, क्या हुआ? उस पर उन्होंने आरोप लगाया कि भाई उनको गलत केस में फंसा के तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट तक गए थे ना। एजेंसी का इस्तेमाल, जिसके हाथ में एजेंसी वो उस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय तो हमारे हाथ में नहीं है ना, जुडिशरी के तो हम मालिक नहीं है। मान लीजिए कि महाराष्ट्र के पुलिस की आप बात करते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक वो गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपको सरेंडर होना चाहिए। कानून है इस देश में, अंधा कानून नहीं है। चाहे दिल्ली वालों को लगता होगा वो कानून के मालिक है, लेकिन महाराष्ट्र में वो बात नहीं है। महाराष्ट्र में कानून का ही राज है। ठीक है, गोवा पर आते हैं। सूरज ढल रहा है, तो गोवा में किसका सूरज उगेगा, किसका ढलेगा, आपका क्या आकलन है? मेरा आकलन यही है कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं, बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा, नहीं। लेकिन सरकार तो वो बना ही लेते हैं, पिछली बार भी उनको बहुमत नहीं मिला था। देखिए, वो तो अमेरिका में भी सरकार बनाएंगे, वो तो कहां भी सरकार बना सकते हैं। वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी उनकी सरकार बनाएंगे। बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे धनिक पार्टी है। 4,000 5,000 करोड़ से भी ज्यादा धन उनके खाते में है। हम तो गरीब लोग हैं, हम तो सामान्य लोग हैं, तो उनको सरकार बनाने दो। खरीदी और डकैती से सरकार बनती है तो उसे सरकार नहीं कहते, उसे कहते हैं कि एक माफिया की गैंग चलाना, जो अब तक गोवा में चल रहा है। नहीं तो फिर कैसे आप अपना लक्ष्य कैसे पार कर पाओगे? क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार, पिछली बार तो 13 सीट पर उन्होंने सरकार बना ली थी, अपोजिशन पार्टीज कुछ कर ही नहीं पाई। अपोजिशन पार्टीज के पास बहुमत होते हुए भी वो कुछ कर नहीं पाए। गलती से लोग सीख जाते हैं, अब वो गलती नहीं होगी। अगर गलती होती है तो जनता माफ नहीं करेगी आपको कभी। अब नहीं, 2022 में वो गलती नहीं होगी। गोवा में बीजेपी का मुख्यमंत्री अब नहीं रहेगा। ये आपका प्रेडिक्शन है? प्रेडिक्शन नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं। चलिए ठीक है। और शिवसेना उस वक्त क्या करेगी वो भी हमें देखना होगा। हालांकि उसके लिए आपके उम्मीदवार जीतने बहुत जरूरी है। 40 सीट वाली गोवा है और इस बार हर पार्टी अपना दावा ठोकने की कोशिश कर रही है। कम से कम 4 पार्टीज सामने आकर लड़ रही है। शिवसेना एनसीपी के साथ यहां पर लड़ने की कोशिश कर रही है। अभी अभी संजय राउत साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे, ये बात आपने साफ कह दी है। और गोवा में बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं होगा, ये भी दावा संजय राउत यहां पर कर रहे हैं। संजय जी, आपने आज इंडिया टुडे राउंड टेबल में हमारे साथ आप जुड़े और हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोवा राउंड टेबल इसी तरह आगे चलता रहेगा। कुछ और नेता भी जुड़ने वाले, देवेंद्र फडणवीस और एक महाराष्ट्र कनेक्शन थोड़ी देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं, वो भी बात करेंगे। तृणमूल कांग्रेस से भी यहां पर नेता आने वाले और अरविंद केजरीवाल के साथ हम हमारे राउंड टेबल का ये सेशन खत्म करेंगे। लेकिन फिलहाल संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस राउंड टेबल में आए इसके लिए। थैंक यू। check.
That's your mic. All right, for our next session, new entrant to Goa. They'd fought in 2012. They didn't fight in 2017. They're back again in 2022 in Goa. Is the TMC. I have with me MP TMC Sushmita Deb. She's also co-in-charge Goa. Thank you. Welcome for coming and joining us this lovely evening. Sushmita was just telling me right before that she's been in Goa for as long, but she hasn't seen the beach. And this is the first time she's actually seeing the beach. So, I'm glad we gave you that opportunity, Sushmita. And thank you for joining us. Thank you so much for inviting me on this show. Sushmita, let's begin with TMC's foray into Goa. You guys, that historic win you scripted in West Bengal, you marched into Goa 4 months before elections. It was also at a time, when Meghalaya was happening, where overnight you guys became the principal opposition. Meghalaya, I'm sure it's, when experience taught you it was different, what Goa, but I'm sure you thought that it is going to be something maybe like Meghalaya, where it's an easier state to deal with. Have you, coming in here, is there a reality check for the TMC? Because if ground reports are to go by, if numbers are to go by, then TMC's lot is not looking as good as it should have been, or at least what was perceived 4 months ago when you guys came in here. You see, when we first decided to come to Goa as a party, the situation to us and as per the ground realities on the basis of our real-time surveys was that there was a massive wave against the BJP. People of Goa were sure that they're not going to go with the BJP. But at the same time, they were very skeptical about who to vote for, given what had happened in 2017, how the en masse exodus from the Indian National Congress. So there was a feeling that they needed an alternative here. And that was really our impetus to come into Goa. The timing has been questioned not once but several times, and why at such a late stage. But to be honest, the Bengal elections finished in the May of 21, and after that victory we repositioned ourselves and we picked Goa because our view was that there was a crisis in Goa, political crisis, where there was no alternative, and that was the mood of the people. And it is a fairly smaller state too, as you know. So we picked Goa and we decided to give it our best. I mean, you are telling me that the numbers are saying something else, but I believe that no one on the ground can deny that we are in the fight. We are part of the narrative. You may love us, you may hate us, but you can't ignore us. And our candidates, I think in 90% of the seats, I wouldn't say 100%, are contending hard, and neither the Congress nor the BJP nor any other party Aam Aadmi Party can ignore the Trinamool Congress candidate and their might on the ground. Well, we definitely cannot ignore the TMC's presence in Goa, because for anyone who's come to Goa in the last 3 months, you only see hoardings of Mamata Banerjee. It's every 10 steps that you go. So that is what is perceived. And I want to ask you that question. Because of, this massive thrust on advertising, this massive thrust on social media, you are perceived to be the outsider which came with money and is trying to sway an election, and maybe that is why possibly getting rejected. You see, all the people contesting elections are all Goans. Nobody has come from Bengal and taken a ticket in Goa to fight. And the reason that you're calling, or that narrative or outsider, it's the BJP's narrative. And the reason they are saying it is because Mamata Banerjee is the Chief Minister of Bengal and she's decided to come and fight in Goa. That way Narendra Modi was the Chief Minister of Gujarat and then decided to become the Prime Minister. So nobody called him an outsider because he comes from a party which had a national base. But I don't think any political party, if they decide to go to any state, can be called an outsider. It is unconstitutional to say it. It is absolutely a communal statement, if I may say so, and it's undemocratic. Mamata Banerjee as a leader has made her position very clear. She will go and fight the BJP where she feels there is no alternative, or the alternative is coming across as weak. And we are on record saying we are not in Punjab, we are not in Uttarakhand, we are not in UP. We picked Goa, and the reasons are very clear, because there was no alternative in the minds of the people. 4 months earlier, you said you came to Goa because you thought there was no political alternative. You wanted to present that with the TMC to the people of Goa. But somewhere down the line, 4 months later,
many would suggest that you turned around and you wanted to ally with the same party you wanted to replace, the Congress. You see, when we first came, like I told you, people perceived Congress from a position of weakness because of what happened in the last election. Like I have seen on social media several press meets on behalf of the Indian National Congress, whether it's Mr. Surjewala, whether it's Mr. Chidambaram, whether it's Girish. But till today, the Congress party has not been able to give the people of Goa a plausible explanation as to why they could not form the government despite having the numbers. They're talking about environment, they're talking about the culture of Goa, they're talking about the corruption of BJP. But the first question that the Congress party is actually facing on the ground, that what went wrong. Today, I believe Rahul ji is coming on the 4th. All the candidates are going to take a pledge that we are not going to defect. I mean, you must have seen it on their digital platform. But the question is, you got 17 MLAs who did not defect on day one. What were the people who are at the helm of affairs doing? I think the pledge needs to come from those people that this time they'll not mismanage it. Then and why- that's a big question in the minds of Goan people. You, sorry. No, complete. See, today, like I said, when we first did our ground survey, the narrative vis-a-vis the Congress was, it's no point giving them the kind of mandate that they got last time because they literally threw it away. And you should have Mr. Valerio come on your show sometime and ask him what actually transpired despite 17 seats and a letter that was signed and ready to form the government. Why did that letter not reach the governor? That's the question Congress needs to answer. And unless they answer that question, there will be a big question mark right till the 14th of February, which Congress will face. There are questions that emerge as well where Mr. Valerio backing out of fighting an election for the TMC is concerned, but we'll come to that later. I'll come back to the question of the Congress. If the Congress is such a weak link in this election, then why publicly want to ally with the Congress? You, the TMC, made it very clear that they wanted an alliance with the Congress. The Congress turned you down. We came fighting with our full might. I mean, 4 months back, I had friends coming to Goa. I myself hadn't joined the team with Mohua. And people saying, my God, Trinamool is the only party on the ground with their Griha Lakshmi, campaign, with their Yuva Shakti campaign. And there was no other party on the ground apart from us. Now you say, why did you approach the Congress for an alliance? As we went closer towards election, there was a view on the ground that the fight against BJP may be stronger if TNC and Congress had some sort of an understanding. And Congress was consistently building up this narrative against us that Trinamool Congress is going to divide the votes and Aam Aadmi is going to divide the votes. I mean, go back, a month and you'll see that was their narrative. So we came clean. We are very clear, our fight is with the BJP. And if people felt that Congress and TMC having some sort of an understanding which strengthened the opposition, we are not arrogant. So we said, okay, fine, let's talk. But Sushmita, that is still what the Congress says. I had Randeep Singh Surjewala here just about 5 minutes ago, before you. And that's what he said, that what the TMC, or even he said the Aam Aadmi Party, what both these parties have done is, you have muddied the political waters of Goa, where you'll be nothing else but a spoiler. You see, it reeks of arrogance when a party says that another party coming and fighting it out on the ground, doesn't matter which party it is, it's a spoiler. Going by those standards, there are only 2 national parties in the real sense who have spread across the country. That means no third party can come up. Do we keep waiting for Congress to defeat BJP? No, we have every right to come and fight here. But in the fight, if we feel that we should open the doors to talk about an alliance or any other understanding, it's in the greater interest of Goa to defeat BJP. So for the Congress should have come 4 notches down. I mean, you are yourself saying that, we are dividing the vote, these parties are being spoilers. That means you are accepting the fate. That itself is an admission of the fact that we are a factor. So what is it the Congress wants? That everybody should pack their bags and go? No, they're not open to an alliance. So what the Congress is saying is that your reality check was the Congress in
it was a reality check for the TMC, but also on the strength of the Congress in Goa. And with you coming in right now, you have muddied the waters in terms of splitting the vote as such, because you are presenting an anti-BJP picture. You've been a co-in-charge here. You know how small the margins are on each seat. So you're going to, yes, the margins are small. And in midst of all of this, the BJP will walk away. No, I think it's a very unfair argument on the part of the Congress if they are saying so. See, please understand, I again want to say that with the Trinamool Congress coming on the ground in Goa, it has actually injected dynamism into the opposition politics. Congress was lying dead. Please believe me, Congress was dead. We came and we injected dynamism into the Goan thing. But yes, there was a narrative building up against us by the BJP and to some extent by the Congress saying they're not willing to talk, they're being spoilers. So we said, look, we are willing to talk. That's all we said. Many suggest that your willingness to talk stems from the fact that in 4 months of you coming here, you've seen desertions, you've seen internal dissent, and what you have primarily are second-hand candidates. Mostly 8 of your candidates right now are the ones who were denied a ticket by the Congress. 2 of them themselves joined you because they were denied a ticket from the BJP. What are the 3 things you said? Desertions, internal dissent, and defection. No. Desertion, internal dissent. What would I say? Okay. Candidates, your candidates, second-hand candidates. Let me tell you, these 3 words can be applied to any party in Goa. It can be applied to any party, even the Indian National Congress. Mr. Falerio left the Congress and joined Trinamool Congress. Mr. Lobo left the BJP and went to Indian National Congress. But Mr. Falerio the same Goa Forward party, which put egg on the face of Indian National Congress, has now gone back to Congress. So I think we are all at par. So let's not do any mudslinging. Each party has been through a similar experience in Goa, and we are all fighting it out with what we think are good candidates. And at least we are not getting our candidates to say, please take a pledge that you're not going to defect. See, let me put it in perspective. What good is a pledge when the Constitution says if 2/3 of your MLAs decide to leave, they'll go? Is the Congress pledge greater than that? And that's exactly what happened to the Congress. So this pledge is not going to work. This pledge is not going to work. But I understand why the Congress is doing it. It comes back to what I said. There's a huge trust deficit where the Congress High Command can hold on to the candidates that will win and come. And the biggest evidence of that is the pledge. Sushmita, the Congress suggests that 8 of the ones that they didn't give a ticket to are the ones that you've entertained. 2 of them from the BJP. So that's why the second hand. Mr. Lobo and his wife are not getting a ticket from the BJP, so they're in the Congress. Fair enough. You know what I'm saying. So we are all guilty of the same thing, or we all stand vindicated of the same thing. Look at it either way. Sushmita, where does the TMC's alliance with the MGP stand right now? Because the MGP was missing when the manifesto was announced. Because it is said your best bet right now in Goa is your alliance with the MGP. See, MGP was not missing. The working president of the MGP was there. Yes, I understand when you say that alliance cannot only happen on paper. Alliance has to work on the ground. There has to be vote transfer. So MGP has to transfer their vote to us. And we are working on that. We have a complete schedule of where MGP leaders will campaign for our candidates. Just wait till the 5th, and I think that was my second question, because they haven't really come down. But I'll ask you another one. Where does the TMC, keeping in with your alliance with the MGP, where does the TMC stand on ideology? Because when you take on nationally, you have this very anti-Hindutva, anti-right-wing stand. The BJP does this. The MGP has gone a step further in many instances in Goa. So is the ideology different at a national level when you're looking at making national statements? When it comes to alliances, it suits you, so you go with the MGP? What is the TMC ideology? See, if you look at our manifesto, it's very clear. Those are the things we've agreed on in Goa. It's like saying, why is the Congress with Shiv Sena? It's like saying, why is the Congress with Shiv Sena in Maharashtra? Isn't there a clash of ideology? It's very simple. MGP is opposed to the Bharatiya Janata Party. MGP is going to fight Bharatiya Janata Party in their bastions. So we are very clear that MGP is going to defeat the BJP in their strongholds. We're quite sure of that. We've done our homework. So let's wait till the 10th of March. And you think MGP will still stay with you after the 10th of March? Yes, they will.
They definitely will, but I'm not sure whether Goa Forward will stay with the Congress. You see, I'll tell you something. It's a real issue in the minds of the people that what and who they are voting for, what will happen on the day of the thing. That's why Aam Aadmi Party has an affidavit. It's a nice gimmick. Congress has a pledge, but we are very clear. We've had our talks. We've agreed on what kind of politics we want to ensue as alliance partners, and that's our faith. And I'm 100% sure that the MGP will not go with the BJP. Their entire politics is against the BJP. Look at it. Ideology is the same. Ideology may be the same, but the question is, when two parties come together, you have like a common minimum program, which I've seen in the Congress, and that's our manifesto, and that's our agreement. That's our agreement. And I mean, politics is very dynamic. So you are right in saying that ideologically are you on the same footing, but we saw MGP as a force that could fight the BJP in their bastion, and that was the basis of our alliance with them. Sushmita, staying with ideology, why should anyone look at you being different than the Bharatiya Janata Party? Because you've been accused of massively poaching in Goa. You wanted to ally with the Congress. They say one of the main reasons they didn't is because you came and poached all their leaders. And you have always accused the BJP of following the ideology or the politics of defection, of poaching. How does that make you different than the BJP in Goa? I like the fact that you're saying Congress said we came and poached all their leaders. Then it's the Congress with the second-rate candidates left if we've taken away all their leaders. Anyway, be that as it may. See, I'll tell you what. This whole whining about poaching doesn't suit the Indian National Congress, with all due respect to them. They're a very old party, grand old party, like Prashant says. But see, I'll tell you something. You cannot be poaching BJP people in Uttarakhand and posing with them in 12 Tughlaq and then saying, Trinamool is taking all our leaders. Have they not taken leaders in Karnataka from the BJP and made them join with DK Shivkumar? Have they not given a Nana Patole, made him the chief of Maharashtra? Have you not made Revan Reddy the president of Telangana? So, it's whining. I mean, these are crocodile tears. So it's like if you're living in a glass house, don't throw stones on others. You've taken Lobo from the BJP and Lobo's wife from the BJP. Lobo has given Congress half their candidates. So I think that argument doesn't stand. It's very simple. We came as a party. You promised the new dawn. You said that's what you came in, that the new dawn for Goa. But the politics is the same of defection. See, let me tell you something. Goa is a very small political class. It's a very small state, a bit like the Tripura. So when a new party comes, anybody you take will come from some party. You know what I mean? If you start a new television channel and you decide to get 10 good anchors, they're bound to come from either India Today or NDTV or those channels. So is that poaching? No. You're not forcing anybody to come. We are saying we are a new party. We want a new dawn. Help us. These are our schemes. This is how we plan to do it. And they joined Mamata Banerjee. And let's face it, she's a force to reckon with today in India, whether we like it or not. If you're going to talk about the force to reckon with in Mamata Banerjee, you named Prashant Kishore. Who is running your campaign? Is it IPAC or is it TMC? I don't see IPAC giving any speeches anywhere. I don't see photographs of IPAC being tweeted, but yes, they are consultants. It was a greenfield project. They came in first and gave us a proper thorough study. The surveys I keep talking about was first done by Prashant Kishore and the IPAC team. We don't deny that. But after that, Derek O'Brien came in, Moha Moitra came in, I came in, others came in, Pavan Verma has come in. So it's not like IPAC is running the show. But when you do a greenfield project, you need to know what the ground realities are, what you keep telling me about. And remember, a consultant brings in an objective view. There are no biases, he speaks truth to power. Did an overzealous consultant sell TMC the dreams of national expansion through Goa? If you don't have fire in your belly, if you don't have dreams, then why are you a consultant? A consultant is in the business of giving you confidence and telling you the truth, the limitations. That's what Prashant does. We knew our odds.
And we are not scared of taking on a new challenge. How else do we expand from Bengal? I mean, no consultant can come and tell you, here is a guarantee and you're going to win. He said, it's a small state, you were fighting chances, a vacuum there, Mamata Banerjee is a brand name, let's fight it out. So we came. I mean, you can't hold a consultant to any guarantees. You can't do that. Sushmita, with the TMC coming, what indirectly happened was that the Aam Aadmi Party, which was seen as a relatively outsider, newer player in Goa, became the insider, while you appropriated the outsider tag. See, as far as I'm concerned, Aam Aadmi Party has definitely been here longer. And you will see that when the results come, it's going to be no different. No different Because to what? our reports say that they haven't gained anything in the last 5 years. No, if you look, Electorally, it's not going to convert into a game that the time they've done in Goa. Just trust me when I say that. That's my view. I may be wrong, but this is our view. Aam Aadmi Party may have come 5 years back, but I don't think they've been consistent. They were here in 2014. You were here in 2012. You didn't fight 2017. So we made a beginning 4 years back, and we are going to be consistent. You have to wait 5 years to see whether we are But you consistent skipped or not. 2017. So tell me something. Suppose we came after the Goa elections, then someone can say, why didn't you come before? If you come 3 months before, why didn't you come 6 months before? You have to start somewhere. And I think it's extremely unfair in such a large democracy to tell a party which is trying to expand that don't go to this state because you'll be cutting this vote and that vote. Of course we are here, we will eat into someone's vote share. Why not? You're a national party. You're the mighty party. Fight us. Why are you so scared? Why are you crying? You talk about national ambitions. Yesterday, very many, some would suggest foolhardy, some would say it takes a fair amount of stomach to make a claim that, or make a statement that you'd be fighting, which Mamata Banerjee did yesterday in 2024 from Uttar Pradesh. Now, that's very clear. She's made known her national ambitions. Was it, we'll talk about that after, but I want to ask you, was it with an eye on what's happening in Goa right now? See, Mamata Banerjee, after the last assembly election, first met Mrs. Gandhi and like-minded parties in the month of August. I remember it was 20th of August. And opposition unity, that whole discussion was on. She was crystal clear in the meeting. She said, whoever has the strength to fight BJP in wherever must get together. She was a leader who in that meeting told all the other leaders present there, including Mrs. Gandhi, Congress president, that you need to talk to a Jagan Reddy too. You need to talk to TRS too. You need to talk to Nitish Kumar too. So you can't keep saying UPA. She said it in that meeting that today if you want to beat BJP, you have to say that the NDA alliance partners are not untouchable also. She was the first to say it. So when she talks about opposition unity, she's not just talking about the left and RJD and NCP. She's also talking about a Jagan Reddy in Andhra. So that's her idea. People said, why did she say, oh, UPA is not there? She's right when she says it. UPA was a post-poll understanding to give a governance and to keep BJP out of government. Those same people are today repositioned. How many seats did Congress have then and how much does Congress have now? UPA was a post-poll alliance. So she's saying there has to be a new set of alliance today to defeat the BJP. So this new political order, which she's suggesting, and her claim that she's fighting from UP in 2024, clearly she wants to lead this new political order. She wants to be, the TMC wants to be the primary opposition in 2024. Well, she definitely wants to play a significant role in that fight. And who's going to be Prime Minister, who knows? We've had a Mr. Devegowda as a Prime Minister. We've had Mr. Chandrasekhar as a Prime Minister. I mean, everybody thought Mrs. Gandhi would be Prime Minister, but Dr. Manmohan Singh became. And Mrs. Gandhi has proved she can make any sacrifice in the greater interest of the nation. I mean, she's known for her sacrifice, so you don't know who's going to become the Prime Minister next. Does the TMC want to be the primary opposition in 2024? We want to be one of the strongest forces to fight the BJP on the ground. Half an hour. And if I, sorry to interrupt you, and if I may say so,
that the entire nation and the world, if I may say so, watched the Bengal election. It was one hell of a fight. And anybody who can, anybody who says that Mamata Banerjee is helping the BJP directly or indirectly, knowingly or unknowingly, quote unquote, what Mr. Surjewala said, it flies in the face of what happened in Bengal. She single-handedly against Central Forces Election Commission of India, Narendra Modi ji, Amit Shah, and so on and so forth, fought that battle and how she had been written off. So she is a woman of conviction and she plans to give BJP a fight wherever she feels she can, and she believes in opposition unity. Just trust me when I say that. If any, even in her own election, the speech she gave, I mean, it was an internal meeting, she was crystal clear. She said, I will try my best to bring everybody together, and if I can't, ekla chalo re. That's why we are in Goa. Well, she is all in for opposition unity. The Congress was on this stage 20 minutes ago. They say they are all in where opposition unity is concerned. The Congress also says they're all in for opposition unity as long as each opposition party understands that the Congress is on the center of that opposition unity. Do you accept that? I agree. I want to tell Mr. Surjewala that how can you give me a lesson on opposition unity in Goa? What did you do in Bengal? You tied up with CPM and ISF, whatever that party is, and fought Mamata Banerjee on 294 seats. What were you doing there? You should have shut shop there and let Mamata Banerjee sweep and defeat the BJP in Bengal. Today, why are you in Odisha doing what? What is the Congress's president in Odisha? In Tripura, 1%. Shut shop. If you believe in opposition unity, I wish I was on the stage with Mr. Surjewala. You can't say chit bhi meri or pat bhi meri. Heads is also mine and tails is also mine. You're giving Mamata Banerjee a lesson on opposition unity. Shut shop in Tripura and West Bengal tomorrow. Wrap it up. Ask them to merge with the Congress, with the Trinamool Congress. When it comes on the national stage, will the TMC follow the Congress? Will the Congress say they are going to be the fulcrum of opposition unity? See, we will do everything that's required to do to stop the Bharatiya Janata Party. We will do everything that is required to do. But all I'm saying, let me put it on record. Today, it does not suit the Congress to say, why have you come to Goa? Why are you going there? Why are you going there? What is the logic? That you are trying to cut into the opposition vote. Then I'm repeating, Preeti, they fought into CPM and Congress and went to zero. Let Mrs. Gandhi show her goodwill and her faith in opposition unity by doing a press meet and announcing that they will not give Lok Sabha candidates in Bengal and Tripura, where they are below 1%. Will they do it? I'm just saying, you know what I mean. But what is the mood of the nation? You're a journalist, you're on the ground, you talk to people. The mood of the nation is, there is a huge number of people increasing by the day who want a change in this country, and that has to be everybody's focus. One would think, Sushmita, because of late we've seen Arvind Kejriwal, Aam Aadmi Party is fighting this election here, go all out to praise Mamata Banerjee's leadership. He's called Mamata Banerjee his elder sister. He thinks, in the long run, when we go into 24, she's going to play a significant role. Vice versa. Mamata Banerjee has been very, very kind in terms of verbally praising Mr. Arvind Kejriwal. Would you not reckon, because instead of facing the embarrassment that you did with the Congress by offering an alliance, your natural alliance was the Aam Aadmi Party in Goa. Why didn't you ally with them? See, I'll tell you something. It is not about, there's no embarrassment. We have to stop thinking in those terms. That this is an embarrassment and that is an embarrassment. We approached the Congress because Congress was consistently saying that TMC is not talking to anybody. TMC is the spoiler. So we said, fine. If you think we are a factor and we are also doing surveys. We know what is our vote share in Goa. Let's talk. We never said give us 10 seats, you take 20 or 30 or 10 or whatever. We said, you want to talk, let's talk. But they didn't talk. So there is no embarrassment in that. But if the ultimate aim is what you say is to be anti-BJP, Yeah. then why not ally with the Aam Aadmi Party? Why not start talks there? Both of you fought together in seats where the margin is so small. You would have consolidated that vote instead of splitting it. See, as far as I know, we did not shut doors on anyone. There were a lot of back channels going on. Some worked, some didn't work.
And that's the way it happened. So everything can't be put on record, but I'm telling you something that this Goa election is a very important phenomenon, a very significant phenomenon. See, all your questions are relating to what happened before the campaign started or before the notification happened. But we will have to also, all these questions will be relevant even after 10th of March. So let's see how it goes. I mean, politics is very dynamic. Let's It see. all depends what you get. It all depends on that. I think I tried to explain to many people who raised the same concerns that you are about Goa. But I think an average Goan citizen needs to understand there's a huge risk in putting all your eggs in one basket called the Indian National Congress. It's a big risk. And that's a foregone conclusion. Because of what happened in the last. And I'm telling you that the Goan citizen is very intelligent. They will look at the candidate. They're very small constituencies. Candidates are a big factor. They will support strong candidates, I feel. They will support a lot of strong candidates in Goa, and there are going to be a lot of surprises, I feel, in the Goa election results. And I believe that there is a narrative out there where people are still thinking that will Congress be able to hold on to everybody, and the pledge they take on the 4th will only reiterate that view. It's going to backfire on them. That's what I think. I wish they had not done it. Sushmita, in politics, it's a cliche, I'll quote it, timing is everything. Absolutely. Did the TMC come too late into the game where Goa is concerned? You know, you were on a high after West Bengal. You were seen as this juggernaut. You actually held the juggernaut of Narendra Modi and Amit Shah in West Bengal. Should you either have come in earlier or should you have not come in at all? See, Preeti, there's always, you have to start somewhere. You know, you have to start somewhere. What is the right timing? I mean, you can't take out a Mahurat. But so many states were going to election. We picked a state where we felt there was a vacuum. And it's never too late to go out there, fill up a vacuum and fight a communal party like BJP. We don't fear that. I think it took a lot of courage. It took a lot of conviction to get up and say time is short, yet we are ready for the fight. That's the way you need to look at it. Have you, the TMC, met its comeuppance in Goa? Have you met what? Its comeuppance, have you met? Is it a reality check for you? See, it is not about a reality check for Trinamool Congress. The fact is, in 3 or 4 months, we are part of the narrative. People are talking about us. We have a certain vote share that's going to impact this mandate. That's a lot to achieve in 4 months. I think the reality check is we are even more encouraged that we can do this, and we are going to do it even in other states. That's what we think. We are going to spread our wings in other states. Other states later, I want to ask you about Goa itself. Win or lose? You know, you were here in 2012, you left in 2017, you're back in 22. No matter what you get, let's say, you know, let's not give it a figure, but whatever you get, right? Single digit, double digit, no digit, whatever you might get. Will the TMC stay in Goa right now as a regional force, regional party building from here? Or will you now pack your bags and go back to West Bengal and look at other states? See, when you keep saying pack your bags and go back to Bengal, I repeat what I said at the beginning of this show, that we have not brought people from Bengal to fight here, na? All the candidates are candidates who are fighting. They are from Goa. Why will they pack their bags and go to Bengal? They are Goans. They are going to stay here. They are going to fight. But Sushmita, Goan political history stands testimony, and you yourself began this discussion with that the candidates never quite stay in the same party. So it all depends. So is the TMC here for good where Goa is concerned? We are here to stay. We are here to stay. And irrespective of what may have happened in the past, I think the Mamata Banerjee who's emerging as a leader now cannot be compared to what she was 10 years back. And I think that writing is on the wall. I'll, ask you one final question. What is the TMC's number? Out of 40 seats in Goa, where does the TMC think is going to stand? See, if you ask me for a specific number, I'm unable to give it, because after the 5th, we'll be in a better position. We are doing our surveys almost every 4 to 5 days, and I can tell you that where we were a month back, we are growing stronger.
Okay, and if you ask me a number, and if I hope I'm on your show soon again, around the 8th or 9th, I'll be in a better position to give you Why a number. don't you tell me single digit or double digit? Double digit for sure. For sure. For sure. You'll write it down and give it to me. It's like the Congress's affidavit. Will you write it And Aam Aadmi Party's affidavit. Will you write it down If and you give want it me to to write it down, I'll write it down. I'll come back on your Okay. show. Double and, digit. and what I'm saying is that please be sure. Please be sure, and I reiterate myself, we are here to fight the BJP and we'll go to any length. All right. Appreciate you joining us, Sushmita. Thank you so much. I really enjoyed And it. I'm glad we got you to see the beach in all the time that you've been here campaigning. Thank you.